A current carrying wire produces magnetic field in the surrounding space. That's the Oersted experiment and Oersted effect. Right, now we'll be seeing in this chapter the permanent magnetism, which is shown by some specific type of material. So सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले who observed this? So it was around 6th century BC. Some Chinese shepherd, they found difficulty in moving on the magnetic hills. Some Chinese shepherd found difficulty in moving on the hills, certain hills, because उनके shoes में नीचे iron nails थे. As a result, they found that a particular type of stone has a property that it attracts some magnetic material like iron and nickel, and right. So it was nothing but it was called as lodestone. That particular ore was named as lodestone, and it is nothing but it is a iron ore called as magnetite. क्या होता है magnetite का formula? Magnetite formula chemistry. हेलो भाई लोग. Fe3O4 होता है क्या? Fe3O4 होता है, absolutely. Fe3O4. और hematite का क्या होता है? Fe2O3. So magnetite has a magnetic property, and this is called lodestone. And right. So it is a permanent magnet. It has a permanent magnetism, और permanent magnetism का मतलब इसमें कुछ properties क्या थी? अगर हम इसको use करते हैं, it always attracts some iron and nickel pieces. Plus, if it is hanged freely, it always point in a fixed direction, that is north-south direction for the Earth. So it was used to find the direction, and that's why it is called lodestone, as it is called leading stone. With the help of that stone, Chinese used to travel and on the sea voyage. Right. So this is used for navigation purpose, magnetic compass. Gilbert suggested that it is actually Earth which makes it magnetized, because Earth has this magnetic property, magnetic field associated with it, and due to which the ores present inside, some of the ore gets magnetized. So we are in this chapter part. Lodestone or magnetite has some magnetic property. And magnetic property means it always attracts some magnetic material, plus it always have a directional property, that it is always pointed in north-south direction when it is freely suspended. Bar magnet or magnetic dipole. Bar magnet or magnetic dipole. So magnetic dipole हम पहले पढ़ चुके हैं, but that was for the current carrying loop behaving as a dipole. Now bar magnet is an actual dipole because it has two poles, north pole and south pole. So if we compare this with the electric dipole, like a combination of positive charge and negative charge. So from the positive charge, magnetic field line, electric field line comes out. Similarly, in the magnetic field line comes out from the north pole. Yes. So as a result, if we compare it,
In the case of electric field, positive charge से electric field line produce होती थी, so the north pole can be assumed as positive magnetic charge. Though hypothetical, ऐसा कुछ exist करता नहीं है, but we can compare north pole as a positive magnetic charge and south pole as a negative magnetic charge, which actually should be called as pole strength, denoted as small m. Electric dipole के case में, if there is one positive charge, one negative charge, distance between them is L, then dipole moment is called charge into distance between them. This is called dipole moment. Electric dipole moment of it is called electric dipole moment. Likewise, magnetic dipole moment of a bar magnet or magnet dipole is defined as pole strength into distance between them. अगर इनके बीच की distance है L. Small m is called pole strength, but उसको हम hypothetically एक magnetic charge के form में भी represent कर सकते हैं. So small m is also written as qm. Qm is magnetic charge. Magnetic dipole moment of a bar magnet is equal to pole strength into distance between them. Is equal to small m is called pole strength and L is distance between the poles. Distance between the poles. Or Qm is also called as is identical to pole strength. Qm is called magnetic charge, which is same as the dipole, same as the pole strength. तो ये जो चार्ज वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ दोनों के बीच में एक एनालॉजी बनाने के लिए है. Otherwise there is nothing like magnetic. There is nothing like magnetic pole, magnetic charge. Magnetic poles होते हैं, pole strength होते हैं, but magnetic charge जैसा कुछ है नहीं. This is just a now the magnetic dipole moment is again defined as pole strength into distance, which is again written as from negative charge to positive charge, so which means it is from south pole to north pole. Magnetic dipole moment is magnetic charge into distance between them, and the direction is from south pole to north pole. So basic इसका जो formula है वो similar to electric dipole है, and that is the reason of the reason is because it is same source. One is charge, another is moment of charge. Pole strength is same as magnetic charge और magnetic dipole moment. Dipole moment pole पे depend करता है, pole strength पे depend करता है. Pole strength depend किस पे करता है? How much is this area? Area बढ़ाएंगे तो ज्यादा molecules हैं जो produce करेंगे, and length obviously. So इसमें जो एक अपने word यहाँ लिखा हुआ है L is the distance between the pole. It is not the length of the magnet, क्योंकि magnet के case में the geometrical length and magnetic length is slightly different. Magnet के लिए magnet के end पे poles नहीं होते, poles are slightly inside, and that's why जो ऊपर distance formula में जो हमने dipole के formula में L use किया है, it is not the length of the magnet, that is the magnetic length of the magnet. Geometrical length is this. L here is geometric length, जो कि दोनों के बीच की distance है. Lm is the distance between these poles, and the poles are slightly inside. Lm is magnetic dipole. Magnetic length of bar magnet. L is
ज्योमेट्रिक लेंथ, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. द मैग्नेटिक लेंथ इज geometric length of bar magnet, which is slightly lesser. How much? The magnetic length divided by geometric length is 0.84. So it is slightly lesser than the geometric length because poles exactly boundary पर नहीं होते, थोड़े से अंदर के साइड होते हैं in every magnet. What does dipole strength represent? What does magnetic dipole represent? Dipole moment. How strong will be the magnetic field of two magnets? जिस मैग्नेट का डायपोल मूवमेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा है, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी. जिस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगी. दैट इज द लाइक मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट. सो मैग्नेटिक लेंथ इज स्लाइटली लेसर देन द ज्योमेट्रिक लेंथ, लेकिन क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफाई नहीं होगा, वी विल यूज सेम एज द लेंथ ऑफ द मैग्नेट एज L, but practically it is not same. Another property of magnetic dipole is that magnetic dipoles cannot be separated. जब भी हम पोल को ब्रेक करेंगे और any magnet we try to break into two pieces, से नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग करने का, यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे, वहां पर फिर से डाइपोल्स बन जाएंगे, बट मैग्नेटिक मोनोपोल्स को सेपरेट करना नॉट पॉसिबल इवन टिल द लास्ट एटम्स इलेक्ट्रॉन. यानी अगर हम इसको ब्रेक करते जाए और छोटा जब तक कि वो लास्ट में सिर्फ एक एटम और उसका एक इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, because that electron is also a spinning electron. Spinning electron means circular current, और सर्कुलर करंट में एक तरफ क्या होता है, नॉर्थ पोल, और दूसरी तरफ का साउथ. आप ऑडियो मेरा लो सीधे, यहीं से सुन लो, इंटरफेरेंस होगा नहीं उसमें, लेकिन म्यूट कर दो. ठीक है. तो हमें मैग्नेट को ब्रेक करते हैं, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ तो सेम रही, देखिए एरिया सेम है, बीच में दो पोल्स और क्रिएट हो गए, एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज रिड्यूस्ड. ये L से हो गया L/2. सो पहले अगर इसका डायपोल मोमेंट था m, अभी दोनों के लिए पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज हाफ, सो इट बिकम m/2. सो मैग्नेट को ब्रेक करने पे हम पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. हम मैग्नेट को नॉट इवन टिल द लास्ट एटम्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्रेक करते जाएंगे तो भी उसमें दो पोल्स ही होंगे. मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. राइट. अगेन इफ यू रिमेम्बर, हमने कुछ चार्ट्स के केसेस में पढ़ा था कि जब रिपल्शन होगा, ओनली देन वी कैन से दैट इट इज अ ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. सिमिलरली अगर हमें ये पता करना है कि किसी बॉडी में मैग्नेटिक बिहेवियर है या नहीं, अगेन उसके लिए ट्रू टेस्ट रिपल्शन ही है, क्योंकि अगर किसी बॉडी को वो अट्रैक्ट करता है, दैट अट्रैक्शन इज अगेन नॉट not necessary that both the molecules or both the materials are magnetic. एक मैग्नेटिक और दूसरा नॉन मैग्नेटिक होने पर भी वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन रिपल्शन तभी होगा जब दोनों में मैग्नेटिक बिहेवियर है और दोनों में ही सिमिलर टाइप के पोल्स को पास में लाएंगे, देन दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर. मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते. मैग्नेट को हम अभी अलग नहीं कर सकते. मैग्नेट
राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सो बार मैग्नेट को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, जैसे लेंथ के लॉन्ग कट किया, इफ सपोज अभी हमने परपेंडिकुलर कट किया, इफ सपोज अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस अलोंग इट्स लेंथ, यहाँ से अगर हम इसको ब्रेक कर दे इन टू पीसेस, देन ऑल्सो the dipole moment will be reduced, and this time the reason is pole strength has reduced. The magnetic pole strength has reduced, plus m minus m length l। अभी लेंथ तो l है, लेकिन दोनों के केस में जो पोल की साइज है, एरिया ऑफ द पोल, दैट हैज रिड्यूस्ड टू हाफ। minus m by 2 plus m by 2 and minus m by 2, north south, north south. But since the pole strength has reduced half, so dipole moment is again reduced to half. If for the overall magnet it was m, now it will be reduced to half. मैग्नेट को हम परपेंडिकुलरली दो पार्ट में ब्रेक करें या उसके लेंथ के लॉन्ग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, द डाइपोल मोमेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, एंड द रीजन, एक में लेंथ हाफ हुई थी और दूसरे में डाइपोल की मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इफ सपोज वी हैव मल्टीपल मैग्नेट्स, 2-3 मैग्नेट्स, तो भी हम उनको आपस में कंबाइन करके जैसे डाइपोल का कॉम्बिनेशन किया था, similarly if there are 2 or 3 magnets and we are joining them together in a certain region, तो हम उसको भी आपस में कंबाइन करके एक सिंगल डाइपोल एज्यूम कर सकते हैं, combination of magnetic dipoles or combination of bar magnet. So we have two magnet, M1 and M2. Angle between them is theta. So the net dipole moment will be root of m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 cos theta. This is the net dipole moment. Again, अगर दोनों के लाइक पोल्स टुगेदर है और एक साथ रख देते हैं तो m1 plus m2, अपोजिट है तो m1 minus m2, एंड लाइकवाइज हम दो मैग्नेट को हटा के वहां पर एक मैग्नेट एज्यूम कर सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट है m. So when we compare, there is no magnetic monopole, but if suppose we just hypothetically assume if there would have been a single pole existing, तो उसकी magnetic field को हम कैसे लिखते हैं या force को कैसे लिखते हैं? Like the force between two magnets, force between two magnetic poles, not between two magnets, दो magnet के poles के बीच में. So again, if we compare with the electric field formula, it was 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Likewise, the force between two magnetic poles, 1 by 4 pi epsilon naught की जगह पे आ जाएगा mu naught by 4 pi, and charges की जगह पे आ जाएंगे magnetic charges q1 q2, so qm1 qm2 divided by r. This is the magnetic force between two poles. तो अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है तो अट्रैक्शन होगा, दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ है तो रिपल्शन. सेम लॉजिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में कर सकते हैं. सो आपको बस फॉर्मूले रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, जहां जहां पे 1 बाय एप्सिलॉन नॉट था वहां पे म्यू नॉट पुट करना है, और जहां जहां पे क्यू था वहां पे बस क्यू एम पुट करना है. दैट्स इट. यू विल गेट द इक्विवेलेंट फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड केस. Right? Okay. Force between two magnetic poles is given by the similar kind of formula as the Coulomb's law. अब ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन पोल, magnetic field due to a pole
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था 1/4 पाई Q by R स्क्वायर। इट इज हाइपोथेटिकल, अगर हम एक सिंगल पोल एज्यूम कर रहे हैं तो इट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई Q1 by R। ठीक है, तो हम इसके फॉर्मूलेस को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से कंपेयर करके लिख लेंगे, हमें सबको डिराइव करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था वैसे ही कुछ करना है आपको। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द इंडिविजुअल और फिर उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग मैग्नेट कॉम्बिनेशन। मैं कुछ 3-4 बता रहा हूँ, ये आपको करने हैं। देयर आर 2 मैग्नेट्स क्रॉस, ईच मैग्नेट हैज सेम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सेम डाइपोल मोमेंट ऑफ m। पहले केस में एक क्रॉस मैग्नेट है which means perpendicular to each other। सेकेंड केस में there are 3 magnets which forms an equilateral triangle, each has the same dimension and same magnetic dipole moment b। और तीसरा c है, there are 2 magnets which are inclined at an angle of 120 degree। Fine, each has dipole moment m। पता क्या है, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। I solve, I'm just गुड क्वेश्चन। हमने नॉर्थ नॉर्थ को पास में रखा तो हमने पकड़ के उसको बांध दिया है। इट हैज बीन टाइड और इट हैज बीन वेल्डेड, यस। तो डाइपोल रिपल करेंगे, मैं पकड़ के उनको बांध दिया है, वेल्डिंग कर दिया। कैलकुलेट देयर डाइपोल मोमेंट्स।
राइट डन। पहले का डायपोल मोमेंट कितना आएगा? फर्स्ट वन डायपोल मोमेंट इज, दोनों परपेंडिकुलर है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दैट विल बिकम m रूट 2. So रूट 2m, राइट, it will become रूट 2m, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर. फर्स्ट और थर्ड में m और m दोनों के बीच में एंगल 120, cos 120 is minus half, so it become root of a square plus b square plus 2m square cos 120. Cos 120 is minus half, so you cancel, this will be m only. a और c का दो हो गया. b में करने के लिए मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ, बिकॉज इसको दो बार करना पड़ेगा. पहले फर्स्ट 2 का निकालेंगे और फिर तीसरे वाले के साथ रिजल्ट निकालेंगे, बिकॉज 3 के लिए डायरेक्टली वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला. ठीक है, ये दोनों तो परपेंडिकुलर थे, इसलिए आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स. In this third case, there are two dipoles at an angle of 120. Cos 120 is minus half. We put cos 120 as minus half. थर्ड वाले में क्या किसी ने थर्ड वाले का एनीवन गॉट दिस? so मैंने इसको 60 मान के करा. 60 मानेंगे, ठीक है, एब्सोल्युटली देयर इज 60. मैं लाइक अज्यूम कर रही हूँ 60 है तो फिर वो रूट 2 प्लस रूट 3. Avni, very good. You are also absent last class. Avni, Yes sir. you were absent yesterday. No sir, I was there. No, you didn't join till 4:20, 4:30. You joined late? No sir, I was. अच्छा, okay, maybe I. हाँ, कह रहे थे आप कुछ उधर? हाँ, माइनस एम, रूट माइनस एम क्या होता है? रूट के अंदर माइनस तो हो ही नहीं सकता ना कभी. एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, 2m स्क्वायर थर्ड वाले में. cos 120 इज माइनस हाफ, इसको जब माइनस हाफ पुट करोगे आप, रूट के अंदर तो माइनस किसी भी रियल नंबर के लिए आ नहीं सकता. 2 to gone, minus m square gone, root m square, which is equal to m. Okay, now in this third one, So I had a doubt. Yes. Sir, just if we have 490 angles in the first case. No, we have only Oh. 290 angles. ये तो एक ही magnet है ना? There are only 2 magnets, not 4 magnets. So the 290. There are only 2 magnets. Into South to north. No, no. There are only 2 vectors. There are only 2 vectors. M1 and M2. M1 ऊपर की तरफ, M2 नीचे की तरफ. These two. B का हमें दो बार निकालना पड़ेगा. पहले फर्स्ट 2 का निकालते हैं, तो इन दोनों MM के बीच में आ गया 60. The resultant of these two, let's say M dash, will be root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Cos 60 is half, so M square plus M square plus 2M square into half, 2 to 1, that will be root 3M. इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, that is root 3m, and that is perpendicular to third one, क्योंकि बीच में it will be exactly along the angle bisector. ये 30, ये 60, so it will be 90 degree. So पहले दो का जो रिजल्टेंट आया है root 3m, it is perpendicular to the third magnet m. इन दोनों का हम फिर से रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालेंगे, that will be m net. So because for the 3 resultant, we don't have a direct formula. Root of A square plus B square, 3 plus 1 4, or 4 ka root 2. Net dipole moment is 2m.
Sir, could you please repeat this? Yeah, we have three magnets. Let's say we name them magnet 1, magnet 2, and magnet 3. We cannot calculate the resultant of 3 by one single formula. So पहले हमने dipole moment निकाला 1 and 2 का. Resultant of dipole moment of 1 and 2. Correct? 1 और 2 का Yes. dipole moment resultant root a square plus b square plus 2ab cos theta, theta was 60 degree. इन दोनों का रिजल्ट आ गया √3m. So now √3m और जो तीसरे वेक्टर बचा था, the third magnet m, they are perpendicular to each other. Got it. Right. So the net dipole moment is 2m और वो इनके बीच में कहीं पर आएगा ऊपर की तरफ. And likewise, we can find out we can replace the overall combination of a magnet by changing by finding the net equivalent resultant vector. आगे बढ़ते हैं. अब suppose अगर हम किसी magnet का shape change कर दें, if we change the shape of a magnet, then the magnetic length is always the shortest distance between the magnet. Shortest distance between the magnetic dipole moment. So change in magnetic moment. Magnetic moment or magnetic dipole. So एक bar magnet था length L. This bar magnet has a dipole moment of M. It is a bar magnet, and now that bar magnet of length L is changed into a horseshoe magnet of semicircular shape. मैं इसी मैग्नेट को मोड़ के एक horseshoe magnet बना दिया. Now we have to calculate its new magnetic dipole moment. This magnet is changed into a horseshoe magnet of semicircular shape. Determine its new dipole moment. If it was M, calculate new dipole moment. Will it be changed? Yes, it will be changed because North Pole और South Pole के बीच की distance, shortest distance को magnetic length लेंगे, and that distance has changed. It was initially L, but now it is not L, it is 2R. Length of the magnet is yes. क्या करेंगे अब? Initial dipole moment जो था, अगर हम चार्ज ले लें या let's say pole strength लेते हैं, small m is pole strength, capital M is for the dipole moment. It is pole strength into distance, small m into L. New dipole moment on changing the shape of the magnet will be pole strength into distance, or distance आगे 2r. 2r means r is the radius of this, so this is the diameter, so because this is the same of semicircle. The length of this semicircle L is pi r. R will be equal to L by pi. Substitute small m into 2L by pi. That become 2 into m into L by pi, and m into L is
2 by pi times m. Correct? Yes. Dipole moment 2 by pi times हो गया. So in terms of an example we did, अगर हम किसी मैग्नेट का शेप चेंज करते हैं तो हमने मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ चेंज कर दी, and due to the change in the length of magnet, its magnetic dipole moment will also change. अब आ जाते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड पे and the force between the two magnets. The electric field की तरह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दी अगेन imaginary lines which are used to represent the magnetic field at any point. Properties क्या होगी? Properties ये सब आपने CBSE क्लास में किया हुआ है, इसलिए I will not go in detail. Magnetic field line and properties of the important property है which is different from the electric field line is that it is always in the form of closed loop. Electric field lines के केस में था it cannot form a closed loop and magnetic field lines are always in the form of closed loop. Second, start from north pole to south pole outside the magnet and inside the magnet is from south pole to north pole. The magnetic field lines never cross each other. They start and end on the surface tangentially, or sorry, they start on the surface and terminate on the surface perpendicularly. Normally, जैसे कि कंडक्टर के लिए था इलेक्ट्रिक फील्ड, हम अभी रफली ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, but when in the actual scenario it is always perpendicular to the contact surface. And the relative density of line of force represent the strength of magnetic field, and the line of force always contract or expand along the direction. So all the properties are similar to the electric field line. The only one thing that it is used here is the different properties that magnetic field lines are always in the form of closed loop. ठीक है, अब इसका जो दूसरा इसकी प्रॉपर्टी which is the important one is if we apply Gauss law for magnetism, property of magnetic field line that it is always in the form of closed loop. बाकी सारी properties तो similar to that of electric field line है, intersect नहीं करेंगी, touch नहीं करेंगी, it is always in the form of closed loop. If you apply Gauss law for magnetism, Gauss law is applied for a closed surface. The total number of magnetic field lines
passing through a closed surface. The total number of magnetic field lines passing through a closed surface will always be zero. Why? क्योंकि ये हमेशा एक तरफ से अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ से बाहर निकल आएंगे, since it has to form a closed loop. The net magnetic flux passing through any closed surface will always be zero, must be zero. Anywhere if you consider a loop, since magnetic field lines are going in from one side and comes out from the other side, number of field lines going in and coming out is same, therefore it will be zero. ठीक है, इससे भी कंफर्म होता है कि एक सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता. अगर सिंगल पोल होता तो केवल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही होती या फिर वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती. मैग्नेटिक मोनोपोल्स do not exist. खत्म. That's Yes. Yes, बेटा कुछ पूछ रहे थे कोई. Pavni, you are asking something. no Pavni? something I've noted. Huh? So I was just saying I've noted down. Okay. Yes. So the idea here is magnetic monopoles exist नहीं करते. अगर monopoles होते तो या तो field line वहाँ पे केवल वहाँ पे या तो निकलती या फिर वहाँ पे subtract हो जाती, या तो वहाँ पे terminate होती या फिर वहाँ से originate. Correct? चलो, very good. So magnetic monopoles exist नहीं करते, इसलिए हमेशा integration of E dot dA, B dot dA will always be zero for any closed loop or closed surface. Very nice. ठीक है. So अब वापस आते हैं magnetic field due to a bar magnet. Magnetic field due to a bar magnet or magnetic dipole. So it is identical to a electric dipole. Magnetic field due to a bar magnet. Bar magnet is like a magnetic dipole. Magnetic dipole के लिए उसकी axial position, electric dipole की जैसे इसकी axial position, equatorial position और third was the general position. Similarly, for any magnet also there will be three positions: axial, equatorial or in axial position.
Axial position means along the line joining the magnet. So again, we don't need to derive this because the formulas are exactly similar to that of इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल में से डाइपोल मोमेंट था P. हम कुछ करते थे एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला विदाउट द अप्रोक्सीमेशन व्हेन इट इज नॉट अ शॉर्ट डाइपोल, इट्स 1 by 1 by 4 pi epsilon naught 2 p r divided by r square minus a square whole square. जब हम टोटल लेंथ लेते थे 2a. सिमिलरली जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल पोजीशन में तो 1 by 4 pi epsilon naught को लिख लेते हैं म्यू नॉट by 4 pi 2 p को m r divided by r square minus a square whole square. Axial position में r is the distance from the magnet, 2a is the length of the magnet. Magnetic field is magnetic field in the axial position r distance mu naught by 4 pi 2 m r. Direction of magnetic field is in the same direction as dipole moment, so it is from south to north. जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी. एंड वी कैन नाउ फॉर अ स्मॉल और शॉर्ट मैग्नेट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में a स्क्वायर को नेग्लेक्ट. म्यू नॉट by 4 pi 2 m by r cube. ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे आ गया जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए था. इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल यानी बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. Direction of dipole magnetic field is same as it as that of dipole moment. Perpendicular to magnet, that was called equatorial position. In equatorial position, that is perpendicular to bar magnet. If the length of magnet is 2a, dipole moment is m.
डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, and that equatorial position magnetic field is mu naught by 4 pi. पहले हम इलेक्ट्रिक वाला देख लेते हैं ताकि आसानी हो कंपेयर करने में। इलेक्ट्रिक फील्ड थी इक्वेटोरियल पोजीशन में 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस p डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। राइट, म्यू नॉट बाई 4 पाई माइनस m, यहाँ पे माइनस साइन होता है डायरेक्शन के लिए, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। In equatorial position, the magnetic field is minus of mu naught by 4 pi vector m. So the direction of magnetic field is opposite to dipole moment vector. Now r square plus a square में short magnet के लिए हम a square को फिर से neglect कर देंगे। For short magnet r square plus a square is r square. Equatorial position magnetic field is minus of mu naught by 4 pi m divided by r cube. ठीक है, सो ये भी आ गया मैग्नीट्यूड वाइज, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब। ये तो दो केस हो गए, इक्वेटोरियल एक्सियल, और एक तीसरा हमने किया था जनरल पोजीशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल से थीटा एंगल पे r डिस्टेंस फ्रॉम द मैग्नेट। थर्ड इज एट अ जनरल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 m बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल में म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई आर क्यूब, एंड एट अ जनरल पोजीशन फॉर्म अ मैग्नेट से r डिस्टेंस पे एट एन एंगल थीटा। एट एन एंगल थीटा फ्रॉम मैग्नेट r डिस्टेंस। तो इसके लिए हम क्या करते थे, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ शॉर्ट मैग्नेट। शॉर्ट मैग्नेट के लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर शॉर्ट मैग्नेट। क्या करेंगे हम इसमें, डाइपोल मोमेंट जो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, उसको हम चेंज कर लेते हैं m cos थीटा और m sin थीटा। m cos थीटा की वजह से वो होगी मैग्नेटिक फील्ड इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। Due to m cos theta vector, that point lies along the line, the magnetic field V1, it will be mu naught by 4 pi 2 m cos theta divided by r cube। हमने इसमें m मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर को दो पार्ट में इस सो m sin थीटा की वजह से जो पोजीशन है दैट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट by 4 pi m sin theta divided by r cube।
भी आ गया है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड। B1 and B2 are the magnetic field because of m cos theta and m sin theta. दोनों आपस में perpendicular है, so the net magnetic field will be root of B1 square plus B2 square. B कितना हुआ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई m अपॉन r क्यूब तो सभी में कॉमन है, 2 cos थीटा होल स्क्वायर प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई m by r क्यूब, sin square plus cos square theta is 1, so 1 plus 3 cos square theta is the net magnetic field. Magnetic field due to the magnet at a general position is given as mu naught m by 4 pi r cube three cos square theta plus 1. दूसरा इसमें हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन इज एट एन एंगल फाई फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू दैट पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड आ गया रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, वहां से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, एंड देन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो हम दो तरह से डायरेक्शन लिखते हैं, या तो उस लाइन से मैग्नेटिक फील्ड b1 b2 and b, ये phi, tan phi will be b2 by b1 where net magnetic field की डायरेक्शन किधर है, at an angle phi from the line joining center of magnet to that point. जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं और उस लाइन से एंगल फाई. सो b2 बाई b1 की वैल्यू पुट करोगे अगर, ये था म्यू नॉट बाई 4 पाई m sin थीटा बाई r क्यूब and mu naught by 4 pi 2m cos theta by r cube. Mu naught by 4 pi, mu naught by 4 pi gone, gone, sin theta by cos theta is tan theta by 2. So tan phi is equal to tan theta by 2. Correct. Tan phi. दूसरा हम डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं, another way of writing the direction is the angle at an angle theta plus phi. theta क्या था, theta ये एंगल है, at an angle, this exterior angle becomes theta plus phi. At an angle theta plus phi from the magnetic dipole moment vector. From magnetic dipole moment vector.
So we can see that all the cases of formula of magnetic dipole is exactly similar to that of electric dipole. ठीक है? So I think that's it. We will continue next class. Right? उसकी जो अगला पार्ट है थ्योरी वाला वो आप एक बार पढ़ लेना. फेरोमैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म वाला पार्ट. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.